Today is the best day of my life. आज कुछ बहुत बढ़िया होने वाला है. Thank you very much. Thank you. And okay, so let's start. Yes. So I'll quickly play the meditation and then we'll start the session. Perfect. Start the meditation. Who's leading the session today? I'll be doing so. Breathing deeply in and out, feeling relaxed. Our whole body is relaxed and comfortable. Breathing deeply into your eyebrow space, in and out, turning your attention around, becoming the observer. Breathing into this state of inner being, the observer. Become your inner being, starting in this space of awareness of all that you are and all that you are becoming. Using the power of your vision, of your mind, of your feelings to create, and the power of your belief, your faith in what you really are to bring life to you. We are going to tell the story of our appreciation. I am so grateful right now. I feel so much appreciation for the wonderful life I am living, for the momentum that is building, for all the things that are around me that I can be grateful for. I feel so grateful to have the awareness of who I really am, to see the truth of life and love. I am so grateful that I can feel my good feelings, that I have enough self-awareness that I can tell the difference between a good feeling and a not so good feeling. I am grateful that I can follow my good feelings to a life of fulfillment. I am grateful that I can slow down enough to hear my inner being, to feel what kind of awareness, to feel what that kind of awareness is like. I love this feeling. I love the feeling of becoming. I am grateful for this feeling. It helps me to see my manifestations made real. I am extremely grateful for all the people in my life. I am grateful for my friends, for my family, for my children. I am grateful for my clients, colleagues, and business associates. I am intensely grateful for my partner, my mother, my father. I am grateful for my inner being's closeness and connection to Source, to all that is, to God. I am grateful that I am finally becoming aware of who and what I really am, and are able to understand my role. The fact that I only need to focus on what feels good, and I will attract all that I need and want to achieve my desires. I am grateful for the flow of ideas and loving thoughts, which are becoming more prevalent in my mind with each day that passes. I am grateful for my good sleep. I am grateful for the days I wake feeling rested and renewed and eager. I understand that if I have days when I don't wake like that, that there is another opportunity the following night. I am grateful to have found my purpose, to understand which direction I am going, and I am grateful for the understanding that if things are happening that are not in perfect alignment, that it is temporary, and the sooner I am able to let go and trust that everything will be okay, the sooner I get back into alignment again. I'm so grateful for this alignment feeling.
I'm so grateful for all the signs and signals I get to see along the way, which assist me in knowing. I'm incredibly grateful for my body, for my abilities, skills, and talents, for my awareness of my thinking, for my awareness of my feeling. I am grateful for the abundance that flows continually into my life. I am grateful for the wonderful creations that are becoming and how they are proof to me that I am a magnificent being and I can create my reality. I am so grateful for the moments when I see others who are aware too, and the synergy we feel together as we both expand with moments of shared awareness. I am so grateful for that moment when we say in our hearts, I see you. I am grateful to you for listening. And I thank you for your openness. Breathing deeply in and out. So who's reading today? Please nominate yourself. Yes, sure, please. I'll unmute you. Thank you for nominating yourself. So it's day 25 today. Cue the magic. And as the picture shows, now it's show time actually. And you're in the director's chair. And it's now how you design your life each and every day of hence going forward. It's got everything. It's like now light, camera, action. It's the action time now. And that's how life is gonna go around, move ahead with each and every day. You can design your life. You can set the tone, how you start your day and how you conclude your day. And then it's like eat, repeat, eat, sleep, repeat each and every day. Eat, sleep, repeat. Right. So please start reading. Yes. Thank you, Niju. Life is playfulness. We need to play so that it's gone. 1 second. Yeah, I'll start again. Life is playfulness. We need to play so that we can rediscover the magic all around us. Flora Kahlo, writer, the therapist. Right. So as the quote जो कह रहा है कि life एक खेल की तरह है और हम जितना इसको खेलेंगे उतना ही हम इसके अंदर जादू देख पाएंगे. The day we are born, maybe everyone is like सब खेल के जैसे ही हमने जब सारा अपना जीवन जब स्टार्ट किया था, it was all play. हमारे पास कोई फर्स्ट डे से सब responsibilities नहीं आई थी. It is over a period of time that we got into this. कुछ प्रीसेट नोशंस चले आ रहे थे कि जब बड़े हो रहे हो तो आपको जिम्मेदार
आपको serious होना पड़ेगा. But life was not like that. The day you were born, you have kids in your home, and you see how playfully they play all the time, and it's simply with the innocence that they do it. And we were all born with the same innocence. Only expression that we were all the only emotion that we were born was happiness. It's just that through preconceived notions, certain mentalities, that we all got into this habit. And now this book has again given us the opportunity. Okay, we can go back, we can break all the barriers, all the shackles, and go back to the same old motion, the way you were born. And most of us have been doing it, because then that's why we are able to see miracles in our life, because we have got that mindset now. Okay, yes, like a child, he knows usko kuch chahiye, to he doesn't have any barrier to it. He knows usko kya chahiye, and he just has to ask his parents for it, or his guardians for it, and he usually gets his way out. So that's how magic is. कि आप जैसे ही यहाँ पे आपका basically best friend जो है, it's the universe. Yes, please continue. Yes. Today's practice, Cue the Magic, is one of my favorite practices because it's a game you play with the universe and it's a lot of fun. Imagine that the universe is friendly and caring and that it wants you to have everything you want in life. Because the universe can't just walk up and hand you what you want, it uses the law of attraction to give you signs and cues to help you receive your dreams. The universe knows you have to feel gratitude to bring forth your dreams. So it plays its part in the game by giving you personal cues to remind you to be grateful. Let's finish this paragraph. It uses the people, circumstances, and events that surround you in your day as your magic cues to be grateful. It works like this. Do you want me to read this? No, let me do the analogy for that. So yes, so आज का जो practice है, cue the magic. Like the writers, it's my favorite game as well that I like to play with the universe, because the more you play with the universe, the more reasons or the more signs it will give you, because there isn't any ABCD talk or Kakhaga talk that we do with that universe. उसके साथ वो उसको basically सिर्फ हमारी feelings, हमारी wavelength, हमारी frequency समझ में आती है, and the more kind of vibes, what vibes we give it to, give in the universe, the same vibes we'll get back from the universe. अगर हमारी vibes happiness की होंगी, ecstatics की होगी, तो same vibes हमारे को वापस मिलने वाली है. It's through the people that the universe will bring into our lives. और अगर हमारी vibes negative होंगी, resentful होंगी, anger की होंगी, तो it's the same kind of situation, the same kind of talks that we'll hear around. अगर हम complain कर रहे हैं, तो we'll be surrounded by similar kind of situations. I've done it once the corona last year was in effect. I used to, because everything was closed and I was going through a tough time, so I used to talk to people whom I knew कि वो भी इसी तरीके की situation से चल रहे होंगे. So I just used to call them and connect with them, and we just used to cry on whatever we were like. It was a similar sort of pattern that was following up. And when Magic Book came into my life, I started calling those people who were, I got a lot of connections through the Magic Book. And those people, there were very few who were into that zone. But even if I got one person to connect in that zone, I felt a lot happier. Like I was in this year also, after the second lockdown that was put in, I was talking to my CA, and मैंने उसके साथ करीब आधा घंटा 1 घंटा बात करी. And after the probably hearing me out, because it was me who was just driving the entire conversation, because I had so much to talk to, because he was also quite surprised के जो मेरे CA के other clients थे, from him he was only listening about complaints and resentments and anger, but it was
he for him also it was a different situation, that like at least one person is there who is happy about what the current situation of life is. So he was really happy to talk to me. And then at the end of the conversation, after almost hearing me out for 30-40 minutes, he said, यार क्या खा रहे हो आजकल और क्या कर रहे हो आजकल, क्या different कर रहे हो? So I talked to him about the situation, and he was really impressed. And he himself came into a couple of sessions, because the timing is such that because he has late working hours, so he cannot come into the morning session, so he does it through recording. So it is something similar. The more you are doing, you are more into this vibe, the more universe will give you things to be more playful about. Yes, please continue. Yeah. If you hear an ambulance siren, the magic cue from the universe is to be grateful for the perfect health. If you see a police car, your magic cue is to be grateful for safety and security. If you see someone reading a newspaper, it's your magic cue to be thankful for great news. If you want to change the weight of your body, when you see another person with your perfect weight, it's your magic cue from the universe to be thankful for your perfect weight. If you want a romantic partner, when you see a couple madly in love, it's your magic cue to be grateful for the perfect partner. If you want to have a family, when you see babies and children, take the magic cue and be grateful for children. When you pass by your bank or an ATM, it's your magic cue to be grateful for plenty of money. When you arrive home, it's your magic cue to be grateful for your home. And when a neighbor calls in to have a cup of coffee or you wave to them across the street, it's your magic cue to be grateful for your neighbors. Right. So here, अभी हमारे को book ने जैसे बताया कि the signals that we see, like I was on a short vacation for the last 2-3 days. So I was on the road. So whenever I saw the ambulance, chapter 4, I think it's, which says the gift of health is keeping me alive. Every time I saw the ambulance, this thought came into my mind. The police, as soon as I saw, it was there for my protection. Banks, anything. The roads were so fantastic. I drove to Jaipur. So one of my friends who I got connected through this platform, Dimple, I would like to acknowledge her here, because she is someone who inspired me to drive. I don't like to drive that much, probably 30-40 kilometers in a day is like a good enough drive for me. But I drove to Jaipur myself. She recently drove from I think it's from Ladakh to Kanyakumari. So it was something spectacular that she did, and that kind of put me into action. So these things, like I see Rajan sir, anytime I talk to him or I just I see him on the screen, it's like a cue for me to live a zestful, amazing life. It's like how you see people, how you bring the situation. आप कैसे situation को कैसे इन चीजों को पकड़ते हैं. Like I talk to Mahima, so it's like someone who I see as a money magnet, because she has done a lot of things in that area, and she is a beautiful person as well, both in the heart as well. So these are the situations that you see, that the things that you want in your life. Okay, अगर आप में से probably you'll see Mukesh Ambani, you'll feel the way like he is a money magnet. So it's like how you taking आपकी situation में आपकी life में कैसे ला रहे हैं. It's like I was on the road. I was there. I saw my favorite car on the road. So it was a situation. It was kind of a cue from the universe. Yes, that thing I desire in my life. I have the intention to have that thing in my life. So it is coming thick and fast to me. It's just that the more you see it, it's the universe is giving you cues. कि यार ये आपकी जिंदगी में, it's now you are attracting it in your life. So that's how the universe is playful with you. And the more you're happy
for the situations that you see and more up, because the universe ko kya chahiye, it just asks for your gratitude. The more you show it, see, we are all like 37 people here, we all have survived all our what would I say, all our darkest days or all our harrowing days. We all have survived that, and we are here today. So we have got 100% track record of surviving the bad days. We are all here. So now, if we are here, we are alive. So the only thing, like sir said, sir जैसे सुबह शुरू करते हैं, today is the best day of our lives. So that's the mindset. आप उसी mindset के साथ every day you have to start, आप हर रोज अपना start करते हैं. And when you have that mindset, उसी mindset से you set the tone for the day. उसके लिए हमारे को, like we are on day 25, 24 days से we have been in practice. इतनी सारी assignments हमने करे हैं, इतने सारे many of us have done. हमने क्या करते हैं, मैजिक बुक कई बार कर चुके हैं. I'm doing it myself for the 8th time. So it has been a constant practice. आप day in day out यही कर रहे हैं, just looking for cues. अगर आपकी plate, देखिए universe, it's like the way with the universe is कि अगर already आपकी plate full है, so it's not gonna give you more into that plate, because कोई रखने की जगह ही नहीं बची है उस plate के अंदर. When you start emptying that plate and you are, आप जब उसके लिए grateful होंगे, immediately it would get replenished, because universe में तो सब चीज infinite में है. The more you are grateful for things, the more it will show into your life. Yes, please continue. If you happen to see one of your material desires on your list, such as your dream house, car, motorcycle, shoes, or computer, or of course, it's your magic cue from the universe to be grateful for your desire now. Want me to continue? Yeah. When you begin a new day and someone says, "Good morning," you are being given a magic cue to be grateful for the good morning. If you come across someone who's really happy, I can't, there's a bar. All right, I'll just read this line out. It's your magic cue to be grateful for happiness. And if you overhear another person, yes, please continue. And if you overhear another person saying thank you anywhere at any time, it's your magic cue to say thank you. Yes, please continue. There are unlimited and creative ways the universe has to magically cue you to be grateful in your day-to-day activities. You can never misunderstand a magic cue or get a cue wrong, because whatever you think a cue is for, you are right. The universe uses the law of attraction to magically cue you. And so you always attract the exact cues that you need to be grateful for in that moment. So the cues that we are getting, it's not right or wrong, it's what you perceive, what you take from that cue. Every cue would give you, हर cue आपको एक रास्ता दिखा रहा है, आपको एक, it's giving you a signal. It's how you take it, what your vibe is at that point of time to take that cue. So like I was I was in the vacation. So the hotel I had chosen, I knew it's the best that I've chosen for me and my family. But one of my relatives, he told me that it's not that good. But I knew that I've chosen the best hotel for my family. And when I was there, the 2 days I was there, everything, har cheez, it felt like it fell into places as the way I had thought. The hotel was amazing, the staff was amazing, the food was amazing, everything. It felt like it's like a game of chess, where you know what moves you will play, and as well as what moves your opposition is going to play. So it's something like that. Everything just falls into places because you are being happy, you are being grateful for whatever is being served to you, and that's how it felt. Agree, हर चीज ऐसे बिल्कुल जैसे I had said, I was the director, and all the actors who were there in the hotel were playing their part as the way I liked it, perfect to the T. So it's something like that.
everything. When you are that playful with the universe, it will give you signs, and it's how you take it, how your vibe is, how your perception is. Morning mein aate hi, we are saying today is the best day of my life. So that's a cue. That's the mindset. वो उस mindset के साथ आपको just have to start the day. And when you'll start feeling it, जब आप इसको इस feeling के साथ start करेंगे, everything you'll see that everything starts falling into places through that same vibes, through that same notion. Yes, please continue. Q, the magic has become a daily game I play. And with practice, I know automatically see all the magic cues the universe gives me. And I give thanks to every one of them. It never ceases to thrill and amaze me how the universe finds new ways to cue me to set the magic of gratitude into motion. Right. No, just give me a second. So जब आप ये करने लगेंगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे कि इतने आपको चीजें मिल जाएंगी ग्रेटफुल होने के लिए, that eventually it goes back to the source where it all started. When you are like always into that grateful mode, so I've learned one thing कि gratitude और आपका fear या कोई भी आपकी negative situation है, it cannot coexist. We cannot put gratitude and fear into the same sentence. It's just not possible. So as soon as it's like I've been into this practice, but still being a human, situations आती हैं ऐसी, but as soon as they come, I start being grateful. आप कहीं भी बैठे होंगे, gratitude के साथ यही सबसे बड़ा best part है कि आप कहीं भी बैठे हो, you can immediately start doing it. It can be like you are waiting for someone in the office or someplace. अब वहाँ पे AC चल रहा है, अब वहाँ पे आपको बैठने के लिए आपको you got a chair for yourself. आपको वहाँ पानी क्या कहते हैं, you are being served water to use, anything like that. You can immediately start being grateful for it. Immediately आप देखेंगे कि जो भी आपको अगर मान लो किसी भी तरीके का कोई डर या कोई fear आ रहा है कि भाई what the situation could be when you are meeting that person, if some sort of situation is like that, you'll immediately find yourself getting over it. We haven't done in this session, like Rajan sir has made us do the peak state performance many times. So that is something which I do whenever I am going for a meeting. क्या कहते हैं उसको करने से वो 2 मिनट की पीक स्टेट परफॉर्मेंस होती है. You immediately get so much vigor in your body. Immediately आपकी बॉडी इतनी क्या कहते हैं full of enthusiasm हो जाती है. It's like the confidence that you get doing such things. Probably we'll do it in probably in a day or two. We'll ask Rajan sir to ask to do that for us. We'll do that peak state performance. It immediately gives you the kick, the boost that you need, the confidence you need. And these are the situations, मतलब ये आपको again cue the magic की तरह है कि these situations will help you out to get into that state of mind, into that zone जहाँ आपको लगेगा yes, I am the winner of this, and you will immediately start behaving that way. Please continue. When I receive a phone call from a friend or family member, it's a cue to be grateful for him or her. When someone says, "Isn't it a beautiful day?" It's a cue. 1 second. 1 second. Huh? Sorry. It's a cue to be grateful for the beautiful weather where I live and for another beautiful day. It's an appliance. If an appliance breaks down, it's a cue to be grateful for all my appliances that are working perfectly. If a plant in my garden is struggling, it's a cue to be grateful for all the healthy plants in my garden. When I collect the mail, it's a cue to be grateful for the mail service and for unexpected checks. When someone says that you have to go to an ATM, or I see people in line at an ATM, it's a cue to be grateful for money. If a person I know comes down with a sickness, it's a cue to be grateful for their health and mine. When I open my curtains in the morning and
see the new day. It's a cue to be grateful for the great day ahead. And when I close my curtains at night, it's a cue to be grateful for the great day that I had. Right. So यहाँ पे इन्होंने काफी situations दी हैं how you can start picking cues from the environment, from the universe. Like someone says you good morning, so it's a cue for having a blast today. Garden में आप देखते हैं lots of plants, so it is not only a cue for the struggling plants, but like plants are there for us, for they give us क्या कहते हैं हमको oxygen दे रहे हैं, so it's a cue for the amazing oxygen that we get. Another example Rajan sir has told many a times, जब हम oxygen हमारे को आज तक it's been given to us for free, and जितना भी लोग क्या कहते हैं every day the population is adding, but हमारे oxygen में तो कोई कमी नहीं है. Every day we are getting the same amount of oxygen from the universe, and it is a cue for being grateful for the trees, for the universe. It's free, so we always take it for granted, but not any longer. जितना भी हम ले रहे हैं, if you have to buy it when you are in the hospital, you realize how expensive it is. Really, we just saw during the second lockdown, everyone was looking helter skelter for क्या कहते हैं सब oxygen के लिए भाग रहे थे इधर से उधर, and this was something which is there in abundance, and every day we take as much as we want from the universe. But now, we being grateful, we have learned the art, we have learned the emotion, so it's time to be grateful for it. And that's मतलब सिर्फ वही चीज है, universe की एक वही requirement है. Just be grateful for whatever is being provided to you. Never take anything for granted. Just be grateful for anything and everything that is being provided to you. Similarly, financially, जो लोग थोड़ा finance struggle कर रहे हैं, seeing an ATM machine, seeing a bank, their situation was not like this the whole time. Maybe today they are facing, मतलब आज उनकी जिंदगी में हो सकता है कोई financial breakdown. So think about the days where they had lived in abundance, in absolute abundance. So recount those days, be grateful for those days, and for everything. These all are experiences which life is showing us. We can only see the universe can only हम उतना ही हमारे को वो दे सकता है जितना हम झेल सकें. Anything that we cannot tolerate, it's not gonna give us, वो उतना हमें देगा ही नहीं उसके अंदर. I saw the rock bottom maybe about 1.5 years ago in my life, but now I see the rock bottom as a trampoline. जहाँ पे I saw the rock bottom, and then it was not actually the rock bottom, but it was a trampoline. मतलब trampoline की तरह, what a trampoline does is it helps you to jump, it helps you to go back into the air. So the rock bottom was something like that. Yes, मैंने थोड़ा सा ज़्यादा खींच लिया, but the way it has pushed me back into the air is simply amazing. So that's how it's how you take all the situations that are there in the universe, that the universe gives us. So like कोई अगर क्या कहते हैं और भी इन्होंने examples यहाँ दिए हैं, if someone is not healthy, so it is a cue for you to be grateful for the life, for the amazing health that you have. Please continue. To play cue the magic today, all you have to do is to be alert enough to take 7 magic cues from the universe during the day and give thanks for each one of them. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. You can never do too much gratitude. So you can choose to be more, and if you want, you can even try to respond to as many magic cues in one day as you can. If you've been following the daily magic practices for over last 24 days, you will have reached a point by now where you will be alert enough to notice the cues the universe is always giving to you. One of the many benefits of gratitude's magical, Nikhil, there's a bar, I cannot read. The screen is not visible to me. Can you see now? Yes. No, it's gone again.
Yes, now it's visible. Thank you. One of the many benefits of gratitude's magical power is that it wakes you up and makes you there's a bar at the top of the page as well. Is it now removed? Not yet. Yes, far more alert and aware. And more alert and aware you become, the more grateful you become, and the more easily you attract your dreams. So, universe, cue the magic. Right. So today, आज का जो assignment है, it's again done it very playfully. It's asked you मतलब इन्होंने बोला है कि you have to take out 7 cues. 7 cues it has asked you to take out from the universe that you see. If you are like if you are in the आपको weight reduce करना है, so anyone you consider to have the ideal weight, it's a cue for you to be grateful for the ideal weight that you want, जो आपको चाहिए अपनी life में. Money के sphere में, if you are like going out and you see आपको bank नजर आता है, so it's a cue for you to be grateful for the money that you have. Similarly, in terms of if you consider someone to be as your with the great hair or great health, anything that is like, if you see a couple, then it's again a cue. If you're looking for a partner, things like that. So you have to आपको आज क्या कहते हैं ये 7 cues you have to take out. It like we are surrounded with cues all the time. It's just that अभी हमारी क्या कहते हैं it's now already on day 25, so we have we must have started. हमने ये सब देखना अपने आसपास observe करना शुरू कर दिया होगा. When you are like driving on the road, अगर आपको रोड एकदम स्मूथ रोड मिलती है, so it's a cue to be grateful for the government, for the government, क्योंकि उन्होंने आपको इतनी क्या कहते हैं बेस्ट रोड दी है चलाने के लिए, to drive comfortably, to easily आपको एम्बुलेंस दिखती है, anything. It's just how you start picking, आप कैसे उसको पिक कर रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर. And when you start being grateful, जब आप cues पकड़ना शुरू कर देंगे, it would be like the universe will start playing with you और आपको और cues देना शुरू करेगी साथ में. And जब आप cues पकड़ने लगेंगे, so immediately you know you are a grateful person, and when you are being grateful, as I say a lot of times, when you are being grateful for everything in your life, the universe will give you more reasons to be grateful for. Let's please read the assignment for today. Magic practice number 25. Cue the magic. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you're grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for the blessing as you can. Today, be alert to what's around you and take at least 7 gratitude cues from the events in your day. For example, if you see someone with your perfect weight, say thank you for my perfect weight. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Today's exercise is quite simple again. दो exercises तो हम पिछले 24 दिन से करते आ रहे हैं. The same exercises we have to do. Start our day with counting up blessings. Best thing about this practice is कि आपको कभी भी ऐसा लगे कि आपने कुछ कर दिया है, कि आपने कुछ नहीं किया है, so just do this exercise. Immediately आपको एक boost मिल जाता है. If you feel you have not done anything, you will get a kick for that. और आपको ऐसा लगे आपने बहुत कुछ कर दिया है लाइफ में, so it would immediately tone you down as well. It will deflate all your ego, all your perception, because आपको नहीं पता कि एक पिन भी आपकी लाइफ में क्या मैजिक कर सकती है. So it's just how you take things. Keep your vision open, and anything in life is to be grateful for. Maybe it could be कोई negative situation भी थी, but that is a situation that would be grateful. Like I'll just give one more example over here. Like I was before joining my father's business, I was into job.
I did the job because I had studied, I'd done BTech. So I thought, let me put my education into some experience. Let me gain some experience. So after 1.5 years into that job, I started taking the job very, मतलब मैंने job को काफी for granted लेना शुरू कर दिया. I was just casually taking the job. मतलब office में जा रहा था, and it was so very casual that it didn't look like actually I was going for a job in that case. And one fine day, I got fired from that job. So it was a cue for me. Now when I see things that I was just kind of just killing my time over that. And when I got fired, I came back home. Next couple of days I was just sulking कि मुझे कैसे निकाल दिया job से. And then I got back into motion. In the next couple of days, I had 2-3 job offers with me. And now as I take it, that was a time because universe didn't want me to sit idle or just sit there. वहाँ पे मुझे सर क्या करते हैं, सिर्फ मजे कर क्या करते हैं. It was not मजे actually. The body was kind of had got lethargic because we are designed to perform like that. Like many of us think of going to the gym, but it's like जैसे ही जिस दिन भी सोचेंगे जिम का, when we put an alarm, there is a snooze button, we just put on that snooze button and we sleep. और आप देखेंगे यार 5 मिनट और सो जाता हूँ, and in the next 5 minutes it's like 2 घंटे pass out हो जाते हैं. And it's like the same. It's because the body doesn't want to move. Body को आदत पड़ गई है आराम करने की. It's just we have to break out of that comfort zone. We have to break out of that pattern. You are all here for at 5 o'clock in the morning. So you have done something different. I'm sure you have been doing it all along, but for जिन लोगों जो लोग इसको पहली बार कर रहे हैं, for the new ones, I'm saying they have probably broken some barriers to be here 5 a.m. in the morning. मैंने खुद ऐसा किया because I was a very late night person. I used to sleep around 1 or 2 in the night. And क्या कहते हैं, जो last year lockdown था, it worsened the situation. Doing nothing, it's just that fear of क्या कहते हैं, आप कह लीजिए कि रात वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ था, and we were like just fiddling on the phone or just watching TV or something like that, nothing to do. But जैसे ही लॉकडाउन खुला, the situation was not that hunky dory. The situation was worsening at that time. But something that probably universe saw me with, and the magic book came into my life, and everything just after that changed. And the more I put in more effort, the more kind of appreciation or opportunities I started getting from the universe as well. So it's just that you're here, you have broken that barrier. You're here at 5 a.m. in the morning. If you have never done that thing, it's an achievement in itself. Now you just have to keep on doing this practice. It's like eat, sleep, repeat every day. You have to do that thing. I read somewhere, it's like a 10,000 hour practice that we say. Sachin Tendulkar has done it. Virat Kohli is doing it now. Lata Mangeshkar has done it. So it's like वो लोग अपनी रात को सोते हुए भी अपनी नींद में भी सचिन तेंदुलकर क्या कहते हैं प्रैक्टिस के, उसको सपने भी प्रैक्टिस के आते थे. Whenever he used to fail as well, he used to go back to his old videos कि वहां पे देखता था कि कैसे उसने how you used to get, अगर उसकी फॉर्म भी खराब चल रही, how you got out of those things. So it is just that how you take it forward. Keep on repeating these things, and then yes, when you start being acknowledging these things, जैसे आज का chapter था basically cue the magic, it will immediately start being more friendly. आपको और cues दिखने लगेंगे अपनी life में. जैसे आज की practice भी है 7 cues that you have to look out from the universe. It would be as the book said, cues are there to be picked. It's just how you take the cue. आप किस चीज को, क्योंकि everything is like 2 options, yes or no. So it's how you take the cue. And our last practice, the last thing that we do every night, hold the magic rock in your hands, scan throughout your day, and be grateful for the one thing that was the most fantastic for today.
and be grateful. And with that thought, have a good night. Sir, over to you now. Thank you, Nikhil. Yeah, thank you for reading so well. Yeah, thank you, Nikhil. Thank you so much. Thank you, Smriti, for reading so well. So today's chapter was about cue the magic. So this is actually one of the very fine chapters. ये इतना ऐसा एक अलग किस्म का चैप्टर बनाया है उसने, क्यू द मैजिक. ये बुक पूरी हमको कैसे थैंकफुल रहना है और कैसे सपोर्ट सिस्टम्स क्रिएट करने हैं. अब हमने ये समझ लिया है कि द मोर वी हैव द थॉट्स ऑफ बीइंग ग्रेटफुल, मैजिक्स कीप ऑन हैपनिंग. The more thoughts we have of being grateful, जितने ज़्यादा thoughts आते हैं हमें to be grateful, we are finding more magics into our life. What is the reason why Nikhil is conducting these workshops again and again? Why Mahima is always ready to read this book called Magic again and again? Why Ashwin ma'am ने ये book को इतनी बार कराया है? I remember joining Ashwin ma'am के workshop for book reading sessions of magic for at least about 20 times, 15 to 17 times. दिन में 2 बार कराती थी वो, और मैं दोनों टाइम में अटेंड करता था, because both the time the book reading was something different and I used to make my notes. The reason is the more we are into this environment of being grateful, of learning this practice again and again, same chapter हम बार बार पढ़ते हैं. अब होता क्या है, क्यू द मैजिक. हमारे जिंदगी में इतने सारे सर्कमस्टांसेस आते हैं हमारे आंखों के सामने और हम उनको थैंक यू कहना भूल जा रहे हैं. So this book is reminding you, this chapter is reminding you that cue the magic. Everybody can have a cue कि भाई ये देखूंगा तो थैंक यू बोलना है, ये प्रैक्टिस करना है. एम्बुलेंस देखा, वाओ, आई एम सो थैंकफुल आई एम अलाइव. आज आई एम एब्सोल्युटली ग्रेटफुल that I'm fit, fine and healthy. We see the policeman. Wow, I'm so grateful. I'm so thankful for the law and order. Government के officials देखें तो हमारा दिमाग में पहला थॉट क्या आता है, चोर है साला, काम ही नहीं करता. डॉक्टर को देखते हैं, पैसे खा रहे, लूट लगाए, क्या पैसे कमा रहा है यार. You know, these are the thoughts that is coming to our mind. अब हम grateful तो छोड़ो, appreciate छोड़ो, compliment छोड़ो, सब भूल जाते हैं. अच्छा, कोई बिजनेसमैन को देखा तो ठीक है, पैसे कमा रहा है, ओके, बट डॉक्टर ने कमाया, गया, मान लो मर्सिडीज गाड़ी लेके आता, लूट रहा है, 4,000 रुपए ले लिया मेरे से. सो इट इज ऑल अबाउट योर थॉट्स, इट इज ऑल अबाउट बीइंग ग्रेटफुल. एंड लेट मी टेल यू, आज के बाद में कभी भी कोई भी डॉक्टर के पास गए ना, जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, नेवर एवर से ये डॉक्टर लूट रहा है. हमेशा उसको इतना प्रेम से पैसे देना, अरे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरे को, 3 महीने से मैं उसकी फीस दे रहा हूँ, 3 महीने की दवाइयां खा रहा हूँ, इतना रुपया तो लग गया मेरी दवाई को, अभी तक ठीक नहीं हुआ, कुछ फर्क नहीं पड़ा. भाई, आपको फर्क इसके लिए नहीं पड़ा है क्योंकि आप बोल रहे हो. अनदर थिंग, जिस दिन मरने को पड़ोगे ना, सिर्फ एक ही आदमी काम आएगा, वो है डॉक्टर. He has got the power आपको जिंदा रखने का. इट इज वेरी सिंपल. जैसे हम अपनी मदर को भगवान मानते हैं ना, मतलब दे आर गॉड, बिकॉज गॉड कुड नॉट बी प्रेजेंट एवरीवेयर, सो दे शी में गॉड ने, भगवान ने मम्मी को बनाया है, मदर को बनाया है. उसी तरीके से सेम थिंग इज विद द डॉक्टर्स. बट द थॉट कम्स इज डॉक्टर चोर, यहाँ से यहाँ टेस्टिंग कराता है, यहाँ कमीशन मिलता है, दवाई वालों से कमीशन मिलता है. अरे भाई, द नंबर 1 रीजन व्हाई यू आर नॉट हैप्पी इज बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन व्हाट यू डोंट वांट. अब आपको चाहिए क्या? यू वांट टू बी हेल्दी, सो व्हाई डोंट यू फोकस ऑन बीइंग हेल्दी? व्हाई डोंट यू फोकस ऑन बीइंग लिविंग अ लाइफ ऑफ हैप्पीनेस? आप जिंदा हो उस डॉक्टरों की वजह से,
अदरवाइज इन ओल्डर टाइम्स 40-50 के ऊपर तो आदमी चला जाता था ऊपर, गॉन, 50 years, 60 years gone. It is only because of the science, it is only because of this technology, it is only because of the doctors that we are able to fight, we are able to improve our immune system. Absolutely. Kabhi bhi doctors ko to wow, always appreciate them. Be just thankful to them because they have got the power to save your life. और किसी में वो ताकत नहीं है. They have the real power, they have the knowledge. उन्होंने पूरी जिंदगी निकाल दी है ये सीखने में कि लोगों की जान कैसे बचाई जाए. अब उसी को हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे, then nothing is going to help you out. So whenever you see a doctor, be thankful. You are fit, fine and healthy. You are alive. आपके पीछे कोई खड़ा है, is always there to support you. So there are so many cues you keep on getting every day, and we missed it. We missed to say thank you to our bed. जिस दिन bed नहीं रहता है, उस दिन समझ में आएगा. Be thankful to the electricity, the power, the fan, the air condition. Be grateful to your house. You have a house to live in. Because it is very well said that be grateful for the things you have been provided for. आपको जो भी चीज मिली है उसको आपने appreciate करना है, thankful होना है. और ये cue the magic आपने create करना है. आपने हर किसी ने कुछ ना कुछ cue बनाना है. For example, whenever you can, what you can do is, okay, now this is a tip I am giving you. आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके एनवायरनमेंट में कोई भी चीज देखो उसको एक क्यू मैजिक बना दो. फॉर एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर आपके घर के बाहर एक पेड़ है. सो व्हेनेवर यू आर सीइंग अ ट्री, इट्स अ क्यू फॉर यू टू बी थैंकफुल टू द ऑक्सीजन दैट द ट्री इज गिविंग यू. उस ऑक्सीजन के बिना आप 3-4 मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह पाओगे. Are you getting this? So this is how you make a cue. कि जब भी झाड़ देखोगे ना, thank you so much, thank you. Now ये टेक्निक साइंस क्या है इसके पीछे का? Now let me explain you the science behind this. Always remember the science behind is कि आपके दिमाग में 60,000 thoughts आते रहते हैं. क्या आते हैं? 60,000 thoughts every day. मानो न मानो, कंट्रोल करो ना करो, चाहो या ना चाहो, you are always going to get the thoughts. Now, in general, we always think negative because our mind is always attracted to negative things. Because आज तक हमने नेगेटिव चीजों को ही देखा है. डॉक्टर को जब भी देखा तो लूट रहा है, मर्सिडीज गाड़ी में आ रहा है. उसका घर देखा, कितना पैसा बनाया है. किसी के बारे में भी हमने नेगेटिव ही सोचा है. हमारे टीवी न्यूज चालू करो तो नेगेटिव न्यूज, न्यूज़पेपर में नेगेटिव न्यूज, और हमारे एनवायरनमेंट में सुबह से शाम तक आपको हर कोई आदमी मिलेगा वो कंप्लेन कर रहा है. ही इज कंप्लेनिंग, ही इज ब्लेमिंग, is sad, दुखी. क्या आपको कोई मिलता है? अरे आज तो बहुत मजा है, अरे आज तो क्या बढ़िया क्लाइमेट है, आज तो बारिश के मजे आ गए, अरे आज तो पता है कि क्या हुआ. Nobody shares any good news. आपको कोई अच्छी न्यूज, अच्छी बातें, एक्साइटमेंट वाली पैशनेट बातें, nothing, nobody talks about it. सब कुछ अच्छा हो गया दिन में, पर एक चीज जो खराब हो गई ना, उसी के बारे में बातें. सो अवर माइंड इज प्रोग्राम फॉर नेगेटिव थिंग्स. दैट इज व्हाई वी कीप ऑन थिंकिंग नेगेटिव थिंग्स. अब मेरा ये कहना है कि जब हम थैंकफुल होते हैं, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉजिटिव इमोशंस. लव एंड ग्रेटिट्यूड हैव गॉट द हाईएस्ट पॉजिटिव वाइब्रेशंस इन योर बॉडी. तो जब हम बार बार हम अट्रैक्ट होते हैं थैंकफुल होने के लिए, तो वी आर अट्रैक्टिंग पॉजिटिव वाइब्रेशंस इनटू अवर.
We are training our mind to be positive. So simple. So यही साइंस है. To be grateful, cue the magic. अब टीवी चालू है. Wow. I'm so thankful for the entertainment I'm getting from the TV. Cue the magic. Morning में आप उठे तो that is the biggest cue. So this I have been training. मैं मेरे अपने आप को रोज ट्रेन करता हूँ. जब मैं सुबह सुबह उठता हूँ, I be grateful for so many things, and the most important thing is be grateful that I am alive. I am so grateful that I am alive. आज मैं जिंदा हूँ. Okay, so today's chapter was about cue the magic, and there was also one point. So let me make it very clear. Let me give you another tip today. आज एक और tip देता हूँ. The fastest way to accomplish your dream. आपके सपने पूरे करने हैं, और अगर सबसे फास्ट करने हैं, कितने लोगों को लगता है कि मेरे सपने, मतलब जो मैं सोचता हूँ वो होता ही नहीं कभी. You know, my dreams are not getting accomplished. Yes, right, everyone. There are so many things that is not getting accomplished. सोचा तो बहुत कुछ है, होता ही नहीं था. मेरा तो बैड लक ही खराब है. So there is a tip. The fastest way to accomplish your dream is to be happy now. ये किसी ने हमको सिखाया ही नहीं. To be happy now, because this moment is creating your next moment, and the next moment is creating your next moment, and the next moment is creating your life. So it is so very important to be happy, to be joyful, to be fulfilled, to be grateful, to be in peace, to be in harmony. Hi. Worry, chinta, anxiety, resentful, regret, sadness, depression. Just come out of it. Because जब तक आप हैप्पी नहीं होंगे, यूनिवर्स आपको कुछ नहीं देने वाला, और जो दिया है वो भी ले लेगा. Because universe gives you as per your size of your vessel. अश्विन मैम हमको रोज सिखाती है, increase the size of your vessel. Size of the vessel का मतलब होता है, can somebody share this, because I'm not able to put it in words. Nikhil, you have heard Ashwin ma'am saying this? Sir, it's like जैसे आपने वेसल बोला, या आपकी जैसे प्लेट है, like we have a dessert, हम जब खाना ले रहे हैं, we have a dessert plate or we have a main course plate. So as we are getting it, जितना हम grateful होंगे उतने आपकी साइज, प्लेट का साइज बढ़ता रहेगा. अगर आपकी प्लेट में जो है, अगर उसमें ही रखने की जगह नहीं है, और आप और ठूसने की और उसमें रखने की जगह कर रहे हैं, तो सब गिरता रहेगा. You're not because you're not being grateful for what you already have in your life. So by being grateful, you are increasing the size of your vessel. Simple है. So being grateful helps you to increase the size of your vessel. जितना बड़ा vessel होगा, इतना आप खाना ज्यादा ले सकते हो. बहुत अच्छे से समझाया अभी. जितनी बड़ी प्लेट रहेगी, अब छोटी प्लेट है तो आप थोड़ा खाना ले सकते हो, बट जितनी बड़ी प्लेट को बड़ी करोगे, उतने आप खाना ज्यादा ले सकते हो. हमको ये सिखाया गया था, अरे यार ये तो बहुत लालचू है, इज वेरी ग्रीडी. एक और सेंटेंस हमको बोला जाता है, हमको सिखाया जाता है, ये तो ही अपने बारे में ही सोचता रहता है. उसको क्या कहते हैं, जो अपने बारे में सोचते हैं उसको? It's like greedy only, sir. No. Greedy is one thing. He is only thinking about self. वो किसी और के बारे में सोचता ही नहीं है. Selfish, yes, right word है ये. He's selfish. स्वार्थी. अब ये वर्ड जैसे हम सुनते हैं ना, हिल जाते हैं. नहीं भाई नहीं. अरे भाई, it is all about loving yourself. It is not about being selfish. I am just loving myself. This is the way I wanted myself. Because it is my own body. ये जो मेरी आत्मा है, ये जो मेरी बॉडी है, यही मेरे काम आने वाली है. जिस दिन से मैं पैदा हुआ था, उस दिन से मेरे काम आ रही है.
और जिस दिन तक मरूंगा उस दिन तक मेरी ये बॉडी काम आने वाली है. So if it is okay if I am being selfish, but I am not hurting anybody. Remember this. Now there is a difference. So if I am loving myself, if I am taking care of myself, if I am spending money on myself, I am not selfish. It is not about hurting anybody else. कि मैं किसी और का नुकसान कर रहा हूं और मेरा फायदा, ऐसा नहीं. It is just about loving myself. So being present in the moment now and loving yourself. It is not about being selfish. Okay. So thank you very much. So somebody had a question. So can you please unmute? Yes. Just a second. All right. Yes, Mamta ji, you can ask your question. गुड मॉर्निंग सर. Good morning. Good morning. सर जैसे आप लोग बोलते हैं ना कि हमेशा हैप्पी मूड में रहना, खुश रहना, जॉयफुल रहना, तो जैसे जब जो मैजिक पार्टिसिपेंट नहीं है, जो जिन्होंने आपके आश्विन मैम की क्लास नहीं की है, तो उनके सामने जब हम हैप्पी मूड में रहते हैं, खुश रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं, तो उनके मन में आता है कि दुख में भी खुश है और हम सुखी में भी खुश नहीं है, मतलब तो उनको अजीब लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए सर? It is so true. It is so true. It is so true. लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं हैप्पीनेस में भी हैप्पी नहीं हूं और ये सैडनेस में भी इतना कुछ हो गया तो भी ये हैप्पी है. It is so true. You see, आप कुछ नहीं कर सकते हैं. You can only touch, move and inspire this kind of people. देखिए, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आपकी जिंदगी में जादू होने मतलब आपकी जिंदगी में you will keep on attracting magics, you will keep on attracting abundance. वो जब उनको समझ में आएगा कि भाई ये कुछ भी नहीं था और अब इतना आगे निकल गया है, that is the time they might be inspired. पर आप समझ लेना, ऐसे लोगों का आप कुछ नहीं कर सकते. आपका काम है yourself. Your job is you. I choose happiness. I am happy. I choose happiness. I am happy. किसी ने मुझे गाली भी दिया, मैं upset. Okay, so one more thing. I do get upset. I do get angry. I do get resentful. I do feel regretful. सब कुछ होता है मुझे भी, क्योंकि मैं इंसान हूँ. याद रख. बट मेरे पास टेक्निक्स अवेलेबल है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ग्रेटिट्यूड कर रहा हूँ, मैं लोगों को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं फॉरगिव करता हूँ, ये सब टेक्निक्स में बार बार करते रहता हूँ. इसकी वजह से मैं जो है नेगेटिव मूवमेंट में ज्यादा टाइम नहीं रहता. मेरे भी वाइफ के साथ रोज झगड़े होते हैं. कल रात को भी बढ़िया झगड़ा हुआ था. But then I know the techniques to be grateful, to be thankful, to appreciate life, because I know I don't want to stay in those negative emotions, because the fastest way to accomplish my dream is to be happy now. मुझे हैप्पी रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम हैप्पी रहना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम ग्रेटफुल होना है, ज्यादा से ज्यादा टाइम कॉम्प्लीमेंट देना है, अप्रिशिएट करना है. I will focus on what I want. पहले मुझे लगता था वजन ज्यादा है, मेरा ये बराबर नहीं, वो नहीं. अब कुछ नहीं, बढ़िया हूँ, परफेक्ट हूँ मैं. And now, when you do the rice experiment, तब हमको समझ में आता है I love you, thank you बोलने की ताकत कितनी है. फंगस नहीं लगता है, बास नहीं मारता है चावल. और पानी जो है, राइस एक्सपेरिमेंट, anybody here who has not done rice experiment? Anybody here जिन्होंने राइस एक्सपेरिमेंट नहीं किया है? Okay, very nice. Smruti has not done, Anushka has not done. Okay, so let me tell you, this is the first. मैं जब 5-day वर्कशॉप करता हूँ, 2 चीज मेरी इंपॉर्टेंट रहती है. मैं लोगों को ऐसे जादू करके मेरे पास अट्रैक्ट करता हूँ, और वो 2 जादू होते हैं. पहले मैं उनको राइस एक्सपेरिमेंट कराता हूँ. जब वो राइस एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं 21 दिन का,
वो पगले हो जाते हैं. Because okay, so let me explain you what is rice experiment in short. मेरे पास पूरा राइट अप है. If you want I can send it. So let me see, I'll do it. Because राइस एक्सपेरिमेंट जब हम करते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारी जुबान में ताकत है, हमारी सोच में ताकत है. हम क्या करते हैं, 3 बॉटल लेते हैं कांच की, उसके अंदर हम चावल, जो खाने का चावल, जो पका हुआ जो चावल है, कुक्ड राइस, हम इक्वल क्वांटिटी में डालते हैं तीनों बॉटल में, और उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल देते हैं. एक बॉटल के ऊपर लिखते हैं आई लव यू, थैंक यू, उसको यहाँ रखते हैं एक कॉर्नर में. दूसरी बॉटल को लिखते हैं इग्नोर, और उसको वहां रखते हैं. तीसरी बॉटल को लिखते हैं आई हेट यू, और उसको वहां रखते हैं. तीनों को अलग अलग रखते हैं एक ही रूम में. तो सेम टेम्परेचर, सेम क्लाइमेट, एवरीथिंग सेम, सेम चावल, सेम पानी, चावल भी है पानी भी है. अब हमने 21 दिन तक विद गुड फीलिंग्स इस वाली बॉटल को बोलना है आई लव यू, थैंक यू सो मच, आई लव यू डार्लिंग, आई जस्ट लव यू. उसको रोज बोलना है. इग्नोर वाले को इग्नोर करना है, 21 दिन तक कुछ नहीं करना है. और यहाँ वाली बॉटल को आई हेट यू, कुत्ता कमीना, जितना गुस्सा आता है, जितना भी गुस्सा है, सब उसके ऊपर निकाल. जब आप 21 दिन तक करोगे तो होगा क्या, यू विल बी शॉक्ड, यू विल बी शॉक्ड. ये एक्सपेरिमेंट मैंने कम से कम 200-500 तो करा दिए. मैंने खुद ने 3 बार कर दिए. मैंने एक बार मेरी बिल्डिंग में किया था लॉकडाउन के टाइम पे. I stay in a building in Mumbai. This is a 18-floor storage building. मतलब you can understand, इतने सारे लोगों के सामने मैंने लॉबी में रखे थे तीनों बॉटल. मैंने PWD ऑफिस नागपुर में कराया था. इन फ्रंट ऑफ द चीफ इंजीनियर, जो चीफ इंजीनियर था उसके कैबिन के बारे में मैंने ये तीनों बॉटल रखी थी, और सबको बोला था इसको आई हेट यू बोलो, आई लव यू बोलो. और एक बार मैंने खुद ने किया था सबसे पहले. मतलब मुझे लगा ये हो नहीं सकता है. अब हुआ ये, 21 दिन के बाद में ये काला पड़ गया. आई हेट यू, आई हेट यू का जो बॉटल था, जिसको मैंने कुत्ता कमीना क्या नहीं गाली दिया, मेरे एक फ्रेंड ने तो पान भी खा के उसके ऊपर थूकता गया, उसके ऊपर हट चला. और इसको जो है आई लव यू जिसको बोला, उसको कुछ नहीं हुआ. ना चावल काला पड़ा, ना बास मार रहा था, कुछ नहीं हुआ, ना फंगस लगा. और इग्नोर वाला भी काला पड़ गया. अब हुआ क्या, हमारे शब्द में, हमारी सोच में, थॉट्स इज, हमारे जो विचार हैं वो एक एनर्जी है. उससे मुझे ये पता चला कि मैं जो बोलता हूं उसमें एनर्जी है. तो मैं क्यों बार बार ये बोलूं कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरी तबीयत बराबर नहीं है, मेरा तो दिवाला निकलने वाला है, मेरा तो बैंड बजने वाला है, मेरी तो वाट लगने वाली है. अब कौन बोल रहा है, मैं बोल रहा हूं. अब जब मेरे बोलने में इतनी ताकत है तो मैं क्यों ना बोलूं आई एम फिट, फाइन एंड हेल्दी, आई एम कैश रिच, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम ब्लेस्ड, आई एम अबंडेंस. पैसे की तो बारिश हो रही है, जहां खोदता हूं सोना निकालता हूं, मैं एक चमक का सितारा हूं. क्यों ना मैं ऐसा बोलूं. मेरे अंदर भी जो है फंगस नहीं लगेगा, बास नहीं मारेगा, आई विल बी फिट, फाइन एंड हेल्दी. सिंपल साइंस है, समझने को किसी ने समझाया नहीं, आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूं. ये एक्सपेरिमेंट जरूर कर लेना, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि भाई पूरी शक्ति हमारे अंदर है. जो मैं बोलता हूं उसको मैं अट्रैक्ट कर रहा हूं, बिकॉज माई वर्ड्स हैव गॉट पावर. ये पहला एक्सपेरिमेंट है. और दूसरा एक्सपेरिमेंट में जो कराता हूं, मैं आप लोगों को 5 इररेलेवेंट चीजें लिखवाता हूं जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है. जैसे कि आज आपको कोई खाने का इनविटेशन मिल जाएगा, आपको कोई गिफ्ट मिल जाएगा, कोई आपका बहुत पुराना फ्रेंड जिससे आपने बरसों से बात नहीं की आपको कॉल करेगा या आपको मिल जाएगा. ये मैं लिखवाता हूँ.
और उसमें से जब आपकी चीजें कंप्लीट होने लगती हैं तब आपको समझ में आता है अरे ये तो कोई जादू है भाई। एंड देन पीपल स्टार्ट ट्रस्टिंग मी, और मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। याद रखना, ये आपका पावर, जो शक्ति आपके अंदर है, जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है, वही अट्रैक्ट करता है। ये जो निर्मल बाबा देखे थे ना आपने टीवी में, बड़े बड़े जो ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते थे, ओ बाबा जी मेरा ये, बाबा जी सबका भला करते थे। अरे भाई बाबा जी कुछ नहीं कर रहा था, जो कर रहे थे आप खुद अपने सबकॉन्शियस माइंड को से अट्रैक्शन कर रहे थे। अब मैं आपको बता रहा हूं, जोसेफ मर्फी की किताब है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। वो किताब मैंने 3-4 बार तो पढ़ी है कम से कम। उसमें सब कुछ लिखा है। ये जो भगवान है ना, हम भगवान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय बालाजी, जय माता जी, ये सब हमारा विश्वास है। मैजिक्स आर हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ योर फेथ। क्योंकि आपका विश्वास है, इसके लिए हो रहा है। एंड हाउ इट इज हैपनिंग, वेयर इट इज हैपनिंग, इट इज हैपनिंग इन योर सबकॉन्शियस माइंड। क्योंकि अमेरिका में हनुमान जी चलता ही नहीं है, राम भगवान है ही नहीं, तिरुपति बालाजी है ही नहीं। चाइना में 70% पीपल आर एथिस्ट। एथिस्ट का मतलब होता है जो कोई धर्म में नहीं मानते, चाइना के लोग। पर वहां पर भी जादू हो रहे हैं। वहां जादू इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि वहां पर भी लोगों को किसी ना किसी चीज पे भरोसा है, फेथ है। दैट इज व्हाई मैजिक्स आर हैपनिंग। ये साइंस सिखा रहे हैं हम आपको, बाकी कुछ नहीं है। और ये किताब आपको सिखा रही है बार बार पॉजिटिव जोन में रहो, बार बार हैप्पी रहो, बार बार अपने इमोशंस को पॉजिटिव कर लो। ये टेक्निक सिखा रहे हैं आपको, क्योंकि जिंदगी में आपको सभी लोगों ने बोला बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। अरे भाई पॉजिटिव होना कैसे है, तुझे क्या पता है। मेरी पूरी बैंड लगी हुई है, लोग कर्जा मांगने को आ रहे हैं, कोई मेरी तारीफ नहीं कर रहा है। वो बाजू वाला अब भी गाली देके गया, वो बाजू, उसने मेरी गाड़ी ठोक ली। अब आपको क्या पता है, कुछ भी बोलते रहते हैं। बी पॉजिटिव। कैसे रहूं पॉजिटिव? टीवी चालू करूं तो नेगेटिव, पापा से बात करूं तो नेगेटिव, मेरी मम्मी को बात करूं तो नेगेटिव, घर का माहौल ऐसा, ऑफिस का माहौल इतना खराब, गवर्नमेंट को देखो, करप्शन का लेवल देखो, पॉपुलेशन देखो, भाव देखो, कितने भाव बढ़ गए पेट्रोल डीजल के, फिर भी बोलो पॉजिटिव हो। हाउ इज इट पॉसिबल? भाई बात तो राइट है। अब आपका फोकस ही वहां पर है। अब हमारा फोकस है ग्रेटिट्यूड के ऊपर। वी आर फोकसिंग ऑन ग्रेटिट्यूड, we are focusing on the abundance that I have. So this is all the training of your mind, training of your thoughts. Okay, so let's, thank you very much. So this is what you focus on the good thoughts, क्योंकि जो आपके विचार है वो ही शक्तिमान है, वो ही जादू करते हैं. That is the difference between you and मुकेश अंबानी. उसके विचार अच्छे हैं, हमने भी हमारे विचारों को अच्छा करना है. Okay, so let's start with our affirmation card. So today's card is I am fit and healthy. So how many of you all want to become slim and sexy? Right? So आपका affirmation रहेगा always okay. Now कभी कभी क्या होता है, अगर mind resist करता है, अरे इतना मोटा हूँ फिर भी बोलता हूँ मैं, सुन लो, अच्छा है, मत मिस करो. Okay, so now in that case you say to yourself, I love slim and healthy body. तो आपने मैसेज क्या दे दिया यूनिवर्स को? What you love. I love slim and healthy body. और जब भी कोई स्लिम लड़का लड़की को देखो, फिट लड़का लड़की को देखो, डेफिनेटली उसको अप्रिशिएट कर लेना. These are mind games. क्योंकि याद रखना, ये आपका माइंड ही सब कुछ करा रहा है. Because I am the creator of my life. I am a person with infinite possibilities. I will create my world. How do I create my world? हम हमारी जिंदगी को कैसे क्रिएट करते हैं? By the words, by your thoughts. और कोई नहीं है creation. Creation is by your words and by your thoughts. That is all. Okay, so now
लेट अस रीड द अफर्मेशन। सभी लोगों ने अपने मन में बोलना है, धीरे धीरे बोलना है और उसको फील करना है। जब आप बोलते हैं आई एम फिट एंड फाइन, यू फील इट, फील यू आर फिट। अब फॉर एग्जाम्पल आपके सर में दुख रहा है तो फोकस ऑन योर आई साइड, फोकस ऑन योर स्मेलिंग, स्मोक, फोकस के आपका टेस्ट अच्छा आ रहा है, फोकस करें कि आपको सुनाई दे रहा है, फोकस करें आपके सर पे बाल है। डोंट फोकस ऑन व्हाट यू डोंट हैव, ओके। आई फोकस माय सबकॉन्शियस माइंड ऑन हेल्थ एंड हीलिंग। मैं मेरे माइंड को फोकस कर रहा हूं, मेरी अच्छी हेल्थ और मैं ठीक हो रहा हूं। वाह, आज बहुत बढ़िया लग रहा है, आज तो मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। आई एम हीलिंग, आई डिजर्व टू बी हैप्पी एंड हेल्दी। आई डिजर्व, मेरा ये जन्म सिद्ध अधिकार है टू बी हेल्दी एंड टू बी हैप्पी। आई एक्सरसाइज डेली टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। याद रखना, आप घर के काम कर रहे हैं, झाड़ू मार रहे हैं, पोछा मार रहे हैं, तो आप ये सोचना कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप यहां से यहां चल रहे हैं तो याद करें आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप सीढ़ी चढ़ रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसका एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, आई विल नॉट टॉक अबाउट इट नाउ, बट रिमेंबर, आप क्या सोचते हैं। आप जब झाड़ू मार रहे हैं ना तो एक्चुअली आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। जब आप पलंग को बना रहे हैं तो आप एक्चुअली एक्सरसाइज कर रहे हैं। सो आई एक्सरसाइज डेली टू रिलीव स्ट्रेस एंड एंजाइटी। गोइंग टू द जिम हैज बिकम माई रूटीन। ये मेरा रूटीन है, जिम में जाना, एक्सरसाइज करना, फिट हेल्दी रहना। वाह, ये मेरा रूटीन है। माई बॉडी इज गेटिंग फिट। आई एम लूजिंग वेट इन अ हेल्दी एंड नेचुरल वे। मेरा बढ़िया वजन कम हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, हेल्दी मैनर में हो रहा है। आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट माई इम्यून सिस्टम इज वेरी पावरफुल। मेरी इम्यून सिस्टम बहुत बढ़िया है। वाह, आई एम सो थैंकफुल टू माई इम्यून सिस्टम। माई बॉडी इज माई टेम्पल। मेरा शरीर एक मंदिर है। आई टेक केयर ऑफ इट इन द बेस्ट वे पॉसिबल। और मैं उसका पूरी तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान रखता हूँ। मेरा शरीर एक मंदिर है, मैं उसका ध्यान रखता हूँ। मेरा मन ये मंदिर है, उसमें मैं गलत विचारों को नहीं आने देता। जैसे हम मंदिरों में जाते हैं, जूते बाहर उठा के जाते हैं, नेगेटिव थॉट्स को बाहर रख के जाते हैं। वी गो इनसाइड द टेम्पल विद लॉट ऑफ फेथ एंड लॉट ऑफ होप। हम उम्मीद के साथ जाते हैं, एक विश्वास के साथ जाते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। उसी तरीके से मेरा शरीर भी एक मंदिर है। माई बॉडी इज माई टेम्पल। आई बिलीव लव इज बिहाइंड एवरी मिरेकल। मेरा ये मानना है कि जो भी जादू हो रहे हैं मेरी जिंदगी में, वो मेरे प्यार की वजह से हो रहे हैं। बिकॉज आई लव थिंग्स, मैजिक्स आर हैपनिंग। आई एम फुल ऑफ वाइटैलिटी एंड गुड हेल्थ। आई लव माई बॉडी। मैं मेरे अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ। आई एम थैंकफुल टू माई हेल्दी बॉडी। आई एम थैंकफुल टू माई हेल्दी बॉडी। मेरी बॉडी तो एकदम फिट फाइन हेल्दी बढ़िया है। My muscles are getting stronger every day and giving me more stamina. मेरे जो मसल्स हैं वो रोज ताकतवर होते जा रहे हैं और मुझे बहुत बढ़िया स्टेमिना देते जा रहे हैं। I am getting every day, in every way, I am getting better and better. I breathe slowly and deeply. Remember this. मैं जो सांसें ले रहा हूं वो लंबी गहरी सांस लेता हूं। Remember, oxygen and water is very very important to raise your energy level. आपकी अगर एनर्जी लेवल्स को ऊपर लाना है तो नेचुरल वे में आपने पानी ज्यादा पीना है और ऑक्सीजन को ज्यादा लेना है। एवरीबडी कैन टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी गहरी सांस लें। दिस इज अ प्रैक्टिस यू कैन थिंक ऑफ डूइंग एवरी नाउ एंड देन।
Take a deep breath and slowly exhale. देखिए आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाती है when you focus on your breathing. Okay, let's continue. My body has always supported me. मेरी बॉडी ने हमेशा मुझे सपोर्ट दिया है. I am fine and healthy. I am blessed. I am blessed. I am a child of God. मैं भगवान का बच्चा हूँ. I am blessed. धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी. Thank you so much. Thank you. And let's celebrate this wonderful new session. And let's celebrate. बहुत बढ़िया दिन होने वाला है आज. Thank you. And we all celebrate by clapping. Yes, yes, yes. Thank you. Thank you so much. Okay, so. Thank you, sir. It's already 6:20. So if we have any sharings or questions, we'll do it tomorrow. We have to attend another session, sir and me, and some of us as well. So I really thank you all for being here today and every day. Thank you so much.